पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं सेशन भी हमारा साथ साथ चल रहा है। सेशन हमारा साथ साथ चल रहा है, ठीक है। तो उसके साथ साथ हम लोग अपना बाकी के टॉपिक्स, हमारे 3 टॉपिक्स आ गए, वो भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। ये हमारा जेनेटिक रिसोर्स एंड कंजर्वेशन, और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हमारी वीडियो है, वीडियो को ऑन कर लेते हैं। The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. Dear students, in this lecture we will discuss about the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, and we will also discuss that what is special about these genetic resources for food and agriculture. The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. The conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture are key to ensuring the world will produce enough food to feed its growing population in the future. In 1983, the Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture was established, and the Voluntary International Undertaking on Plant Genetic Resources was adopted. Another major step was taken in 1996 with the adoption of Global Plan of Action at the Leipzig International Technical Conference on the Plant Genetic Resources. All this work culminated in 2001 with the historic adoption of the legally binding International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. The treaty entered into the force on 29 June 2004. This treaty, popularly known as International Sea Treaty, it's a comprehensive international agreement in harmony with the Convention on Biological Diversity, which aims at guaranteeing food security through the conservation, exchange, and sustainable use of world's plant genetic resources for food and agriculture, as well as the fair and equitable benefit sharing arising from its use. This map shows the centers of diversity for some of the world's major crops, and if you look at it, it soon becomes clear that these resources have been widely shared. Wheat, maize, rice, and potatoes are now world crops. As you see in this map, that these crops are distributed in different regions. Food and Agriculture Organization has analyzed the levels of their interdependence. If we look at the food calorie intake from plants within national diet, countries depends on average for about 70% on crops coming from outside of their region. Concretely, the international treaty facilitates access to these food crops free of charge from all contracting parties to ensure their food security. What is special about agriculture genetic resources? First of all, to feed the world, we all need these resources. Agriculture resources have been shared and exchanged over thousands of years. Mostly, it is impossible to identify a single country of origin, and the countries and regions are interdependent. They all depend for their food and agriculture on crops they originated elsewhere. Here are some main objectives or the main provisions of this treaty. First one is multilateral system. The next is access and benefit sharing. Third one is farmers' right, and the last is sustainable use. Multilateral system. The treaty is truly innovative solution to access and benefits sharing. The multilateral system put 64 of our most important crops that together account for 80%
of the food we derive from plants into an easily accessible global pool of genetic resources that is freely available to potential users in the treaty's ratifying nation for some uses. The next is access and benefits sharing. Those who access the materials must be from the treaty's ratifying nations, and they must agree to use the materials totally for research, breeding, and training for food and agriculture. The treaty prevents the recipient of genetic resources from claiming intellectual property rights over those resources in the form in which they receive them, and ensure that access to genetic resources are already protected by international property rights inconsistent with international and national laws. Sustainable use of plant genetic resources. The contracting parties shall develop and maintain appropriate policy and legal measures that promote the sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture. Most of the world's food comes from four main crops. First one is rice, wheat, third is maize, and fourth is potatoes. However, local crop not among the main four are a major food source for hundreds of the million of people and have potential to provide nutrition to countless others. The treaty helps maximize the use and breeding of all crops and promote development and maintenance of diverse farming system. And the last one is farmer right. The treaty encourages the enormous contribution farmers have made to ongoing development of the world's wealth of plant genetic resources. It calls for protecting the traditional knowledge of these farmers, increasing their participation in national decision-making process, and ensuring that they share in the benefits from the use of these resources. Thank you. सो फ्रेंड्स, हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग मटेरियल की तरफ। ठीक है, हमारा लेक्चर हमने ये कौन सा लेक्चर कर लिया? 10 लेक्चर कर लिया, लेकिन हमने तो पढ़ना था लेक्चर नंबर 8। ठीक है, चलें कोई बात नहीं, हम लेक्चर नंबर 8 की तरफ चल जाते हैं और इसकी वीडियो देख लेते हैं, सेशन को भी देख लेते हैं। अभी कोई भी नहीं आया तो हमारे पास टाइम, तो हम Merits and demerits of in situ and ex situ conservation चलेंगे इसकी वीडियो सुन लेते हैं, इसके बाद फिर इसका रीडिंग मटेरियल कर लेंगे। of genetic resources. Dear students, in previous lesson you have learned about genetic resources and different types of genetic resources. We have discussed about plant genetic resources, genetic resources for food and agriculture, and how we can conserve these plant genetic resources. We have discussed about different techniques of genetic resources, and we have discussed about in situ and ex situ conservation of this conservation. In situ, and we have discussed about in situ and ex situ techniques of conservation. Now in this module you will learn about some merits of in situ conservation and demerits of in situ conservation, merits of ex situ conservation and demerits of ex situ conservation. So let's start with in situ conservation and its merit. Dear student, as we have discussed in previous module, that in situ conservation, in this type of conservation we conserve genetic resources inside their habitat, as its name indicate that it is in situ. So in this type of conservation we should conserve all genetic resources inside their habitats, and we have discuss different types of in situ conservation. And
here we will discuss merits and demerits of this type of conservation. So first merit is plant and animal conserve in their natural environment, यानी कि हम plants और animals को उनके natural environment में protect कर रहे हैं, उसमें कंजर्व कर रहे हैं. तो इस तरह से उन एनिमल और प्लांट को किसी और इन्वायरमेंट में जाके खुद को अडॉप्ट करना नहीं पड़ता, उस इन्वायरमेंट के मुताबिक खुद को चेंज करना नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में कंजर्व होते हैं, उनको वहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है. सेकेंडली बायोडाइवर्सिटी परमानेंटली प्रोटेक्टेड. इस तरह से जो वहाँ पर मौजूद बायोडाइवर्सिटी है हम उसको परमानेंट बेसिस पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं. हम सिर्फ उन एनिमल्स का हैबिटेट चेंज नहीं कर रहे, उन्हें किसी और इन्वायरमेंट में जाके प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि उस तमाम बायोडाइवर्सिटी को उनके अपने एरिया में, उनके अपने हैबिटेट में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं. तो इस तरह से अब वो जो कंजर्वेशन है वो परमानेंट बेस पर है. नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्टेड परमानेंटली. इस तरह से वो जितने भी एरियाज हैं उनका जो एक कल्चरल वैल्यू है, कल्चरल हेरिटेज है या नेचुरल, हमने उसको भी परमानेंट बेस पर हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी is maintained and managed. Opportunities may arise for ecologically sustained land uses which come with associated economic benefits. Facilitate scientific research of the site. यानी कि हम उस साइट पर जाकर अगर हम कोई स्टडी कर रहे हैं उन एनिमल्स पर, उन प्लांट्स पर, तो हम उनके नेचुरल हैबिटेट में जाकर स्टडी कर सकते हैं. तो इसके साथ ही ये हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं कि हम किस तरह से उन लैंड का या उन एरियाज़ का एक सस्टेनेबल, एक वाइज यूज़ कर सकें और इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल कर सकें. सो ऑल दीज आर डिफरेंट बेनिफिट्स and different merits of in situ conservation. But like all different techniques, like all different applications which have different benefits, no doubt, but all those techniques have some demerits or some limitation also. So this type of conservation have also some limitation or some demerits. Like genetic diversity may have already been dramatically decreased. एक तो इससे जो genetic diversity है वो मतलब already decrease है. Condition that threatened organism in the area may still be present, such as decrease in interspecific competition. That is important point कि हमारा जो मेन पर्पस था उन स्पीशीज़ को कंजर्व करने का वो यही था कि उनको जो डिफरेंट टाइप के थ्रेट्स हैं उन थ्रेट से महफूज किया जाए, उन थ्रेट से उनको बचाया जाए. तो इसके लिए हमने उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की. लेकिन अगर हम उनको उनके अपने एरिया में, उनके अपने हैबिटेट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इट मीन्स दैट वहाँ पर वो थ्रेट्स अभी भी मौजूद हैं. जो थ्रेट्स उनको पहले ही थ्रेट कर रहे थे, उनकी लाइफ को, उनका सर्वाइवल जो मुश्किल कर रहे थे, वो थ्रेट्स अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं. तो इस कंडीशन में इस तरह के कंजर्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा अनटिल और अनलेस हम उन तमाम थ्रेट्स को ख़त्म नहीं करते जो थ्रेट्स उन ऑर्गेनिज्म की, उन लिविंग एनिमल्स की, प्लांट्स की, व्हाटएवर, उनके सर्वाइवल के लिए थ्रेट है. सो वी नीड टू एलिमिनेट दोज थ्रेट्स. Poachers and ecotourists may see the thriving area as an opportunity and may cause damage. और ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो इन कैटेगरीज में आते हैं जहाँ पर हम उन एनिमल्स को, उन प्लांट्स को प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर इको टूरिस्ट पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद वो आप डिफरेंट स्टडी पर्पस के लिए या हम कह सकते हैं कि डिफरेंट तफरी मकासद के लिए वहाँ पर आते हैं. लेकिन उनके आने के साथ वहाँ पर जो
बायोडाइवर्सिटी है उसको थ्रेट के चांसेस हैं, उसको डैमेज होने के चांसेस हैं, और वहाँ के जो बाकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी थ्रेट पहुंचता है। तो इस तरह भी कंजर्वेशन के मेरिट्स के साथ साथ कुछ डीमेरिट्स भी हैं। नाउ वी विल discuss ex situ conservation, and we have discussed this type of conservation in last module, that in this type of conservation we conserve genetic resources outside their natural habitat. In this type of conservation we conserve different species, or we conserve genetic resources that are outside their natural habitat. It is opposite to in situ conservation, in which we conserve genetic resources inside their natural habitat. Merits, it can be used to protect individual animal in a controlled environment. This means that issues such as predation and hunting can be monitored and managed more easily. Yeah, definitely in this type of conservation we are protecting, or we are conserving animals outside their natural habitat in a very controlled environment. और इस तरह के environment में hunting allowed नहीं होती, अगर होती है तो monitor की जा रही होती है। इस तरह से predation के chances कम होते हैं, different type के disease के chances कम होते हैं। तो वो जो different threats जो उनको अपने natural habitat जी फ्रेंड्स, हमारा एलएमएस बहुत स्लो वर्क कर रहा है, इसीलिए इसमें थोड़ी लोडिंग में देर लग रही है। चलिए इससे लोड होने देते हैं। ओके, तो ये मीटिंग आएगा सेंड हो गई है, हम दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं मीटिंग को। ठीक है, दोबारा हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो मेरा पर्सनल अकाउंट है, स्विच अकाउंट कर लेते हैं सबसे पहले।
चैट में भी देख तो कर रही हूँ, ठीक है। आई डोंट नो, मैम नहीं आई है, तो हम लोग टाइम पूरा करते हैं हम, ठीक है। 4 से लेकर 5 बजे तक शायद थोड़ी देर के लिए मैम आ जाए, तो जो कुछ भी कहेंगे तो उसे सुन लेंगे, ठीक है। जब तक अपनी टॉपिक कवर करते हैं, हमारी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अपना हैबिटेट चेंज कर जाती हैं। तो इस तरह की कंजर्वेशन से इन तमाम जेनेटिक रिसोर्सेज के, इन तमाम एनिमल्स और प्लांट्स के सर्वाइवल जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इट कैन बी यूज टू री इंट्रोड्यूस स्पीशीज दैट हैव लेफ्ट एन एरिया। बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो अपना एरिया छोड़ जाती हैं और डिफरेंट रीज़न से अपना हैबिटेट चेंज कर जाती हैं। वो रीज़न वहाँ पर मौजूद जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट चेंज होना हो सकता है इसी तरह से, या फिर वहाँ पर थ्रेट्स जो हैं, डिफरेंट प्रेडेशन थ्रेट्स, डिजीज़ थ्रेट्स। तो डिफरेंट रीजंस की वजह से जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो अपना एरिया जो है वो छोड़ जाती हैं। तो हम इन स्पीशीज़ को अगेन उन एरियाज में रीइंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और इसी तरह से वो स्पीशीज़ भी जो इंडेंजर्ड है, जिनको एक्सटिंक्ट होने के चांसेस हैं, हम उनको भी अगेन उनके एरिया में रीइंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस demerits of ex situ conservation. First demerit is usually only a small number of individual can be cared for. क्योंकि ये जो ये सेंटर्स जहाँ पर इन स्पीशीज़ को कंजर्व किया जा रहा है, ये सेंटर ज़्यादा एरिया पर नहीं होते, तो इस तरह से हम ज़्यादातर जो स्पीशीज़ है उनको कंजर्व नहीं कर सकते। ये एक लिमिटेशन है कि हमारे पास एक जो एरिया है, प्रोटेक्टिंग एरिया, वो एक छोटा सा एरिया है, वो ज़्यादा स्पीशीज़ को बेयर नहीं कर सकता, तो हम ज़्यादा स्पीशीज़ को कंजर्वेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। और अगर कंजर्व कर रहे हैं तो हर स्पीशीज़ को इक्वली हम केयर नहीं प्रोवाइड कर सकते। इट कैन बी डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू क्रिएट एंड सस्टेन द राइट इन्वायरमेंट। डेफिनेटली हम वो इन्वायरमेंट उन स्पीशीज़ को प्रोवाइड नहीं कर सकते जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जिसमें वो अडॉप्टेड थे, जिसमें वो अपनी लाइफ स्पेंड करते आ रहे हैं। हम उनको यहाँ पर एक बेटर इन्वायरमेंट तो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो इन्वायरमेंट उनके नेचुरल इन्वायरमेंट जैसा नहीं हो सकता। एंड सेकेंडली, इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। एक ऐसा इन्वायरमेंट उन स्पीशीज़ को देना जहाँ पर कोई थ्रेट ना हो, तो इस तरह का इन्वायरमेंट हम बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव है और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है कि उसको मेंटेन भी किया जाए। The animals that are habituated used to human contact may be less likely to exhibit natural behaviors and may be more likely to catch a disease from humans. बहुत सारे animals ऐसे हैं जो कि humans के used to होते हैं, उनके contacts के used to होते हैं, तो इस तरह के animal अपने natural behavior show नहीं कर सकते। वो humans community में रहते हैं, तो वो इन इंसानों के, ह्यूमंस के यूज टू हो चुके होते हैं, तो उनका एक जो अपना बिहेवियर है हम चेक नहीं कर सकते। और इसी तरह से डिफरेंट टाइप की जो जूनोटिक डिजीजेज हैं, जूनोटिक डिजीजेज आर दोज डिजीजेज विच कैन ट्रांसमिट फ्रॉम एनिमल्स टू एनिमल्स और फ्रॉम ह्यूमंस टू एनिमल्स और फ्रॉम ह्यूमंस एनिमल्स टू ह्यूमंस।
तो ये जो डिजीज़ हैं इनके भी ह्यूमन से इन एनिमल्स में स्प्रेड होने के चांसेस मौजूद होते हैं. This type of conservation is usually less successful as many species can't breed successfully in captivity or don't adopt their new environment when moved to a new location. इस तरह की जो कंजर्वेशन टेक्निक है उसका जो एक मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि बहुत सारे स्पीशीज एक क्लोज कैप्टिविटी में ब्रीड नहीं कर सकते. वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट के अडॉप्टेड होते हैं. उस नेचुरल इन्वायरमेंट में वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, इजीली ब्रीड कर सकते हैं, अपने नंबर ऑफ पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं. लेकिन अगर हम उन स्पीशीज को एक क्लोज कैप्टिविटी में रखें तो वहाँ पर उनका सर्वाइवल चांसेस में भी इंक्रीज हो जाएं कि उनको हमने थ्रेट्स उनके कम कर दिए, थ्रेट से महफूज कर लिया है, लेकिन वो वहाँ पर सक्सेसफुली ब्रीड नहीं कर सकते तो उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं करती. सेकंड, समटाइम ये भी होता है कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं, बहुत सारे जेनेटिक रिसोर्सेज ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो कि एक न्यू इन्वायरमेंट में अडॉप्ट नहीं कर सकते. जब भी उन्हें किसी न्यू इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो वो उस इन्वायरमेंट में खुद को अडॉप्ट नहीं कर सकते. तो इस तरह से भी हम इन ऑर्गेनिज्म को उनके नेचुरल इन्वायरमेंट से बाहर ले जाकर कंजर्व नहीं कर सकते. सो दीज आर सम limitations of ex situ conservation. So dear students, in this module you have learned about in situ conservation and ex situ conservation, different merits of in situ and ex situ conservation, different demerits or limitation of in situ and ex situ conservation. लेकिन ये दोनों टेक्निक अपनी जगह पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं. हम दोनों टेक्निक्स में जो डिफरेंट टाइप के जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व कर रहे हैं और इस कंजर्वेशन से जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इन जेनेटिक रिसोर्सेज से उतना ही फ़ायदा ले सकती हैं जितना कि हम ले रहे हैं. अगर हम इन जेनेटिक रिसोर्सेज को मुसलसल यूज़ करते रहें, इन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को मुसलसल यूज़ करते रहें, उनको कंजर्व ना करें, तो डेफिनेटली एक ऐसा टाइम आएगा जब ये रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे तो आने वाले जनरेशन्स जो हैं वो इनको यूज़ नहीं कर सकेंगी, तो उनके सर्वाइवल को एक थ्रेट होगा. इन नेक्स्ट लेसन वी विल डिस्कस अबाउट सम स्ट्रेटजीज फॉर प्लांट कंजर्वेशन. लाइक इन नेक्स्ट मॉड्यूल वी विल डिस्कस अबाउट द ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर प्लांट कंजर्वेशन. थैंक यू. सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो थैंक्स लॉट कंप्लीट हो गई है. हम चलते हैं अपनी स्टडी मटेरियल की तरफ. तो हमारा टॉपिक नंबर 8 है, उसके पास चलिए जाते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम PPTs और हैंडआउट्स को डाउनलोड कर लेते हैं और बारी बारी दोनों को पढ़ लेते हैं. ठीक है, हमारे हैंडआउट्स हैं.
strategy for plant conservation. Dear students, in this lecture we will discuss about what is global strategy for plant conservation, vision of global strategy for plant conservation, and different objective of this program. Global strategy for plant conservation. The Global Strategy for Plant Conservation is a program of the United Nations Convention on Biological Diversity founded in 1999. The Global Strategy for Plant Conservation seeks to slow the pace of plant extinction around the world. The Global Strategy for Plant Conservation began as grassroots movement in 1999 with discussion in the 16th International Botanical Congress in St. Louis. The Global Strategy for Plant Conservation sought to slow the pace of plant extinction around the world by 2010 with target 1 of the strategy calling for completion of a widely accessible working list of all the known plant species as a step toward a complete world flora. In 2010, version 1 of the plant list was launched, aimed to be comprehensive for species of vascular plants like flowering plants, conifers, ferns, etc., and of bryophytes like mosses and the liverworts. In 2010, Global Strategy for Plant Conservation updated its targets to be completed by 2020. In 2012, the Massachusetts Botanical Garden, the New York Botanical Garden, the Royal Botanical Garden Edinburgh, and the Royal Botanical Garden in Kew agreed to collaborate to develop a world flora online. Here is a version of Global Strategy of Plant Conservation. Without plant, there is no life. The functioning of the plant and our survival depends on plants. The strategy seeks to halt the continuing loss of plant diversity. Global Strategy of Plant Conservation. The heart of Global Strategy of Plant Conservation are 5 goals expressed as a total of 16 targets. The 5 objectives and their 16 targets are: first one is the plant diversity is well understood, documented and recognized, and its targets are an online flora of all known plants. The next target is an assessment of the conservation status of all known plant species as far as possible to guide conservation action. And the last target of this objective is information, research and associated outputs and method necessary to implement the strategy, develop and share. The second objective of this program is plant diversity is urgently and effectively conserved, and its targets are at least 15% of each ecological region or vegetation type secured through effective management and or restoration. The next target is at least 75% of the most important area for plant diversity of each ecological region protected with effective management in place for conserving plants and their genetic diversity. The next target, at least 75% of production lands in each sector managed sustainably consistent with the conservation of plant diversity. At least 75% of known threatened plant species conserved in situ, and at least 75% of threatened plant species in ex situ collection, preferably in the country or of origin, and at least 20% available for recovery and restoration program. Next target, 70% of the genetic diversity of crops including their wild relative and other socio-economically valuable plant species conserved while respecting, preserving and
maintaining associated indigenous and local knowledge. Its last target is effective management plans in place to prevent new biological invasions and to manage important areas for plant diversity that are invaded. The third objective is plant diversity is used in sustainable and equitable manner, and it has three targets. The first target of this objective is no species of wild flora endangered by international trade. Second, all wild harvested plant-based products sourced sustainably. And the third one is indigenous and local knowledge, innovations and practices associated with plant resources maintained or increased as appropriate to support customary use, sustainable livelihood, local food security and healthcare. The fourth objective is plant diversity is used in sustainable and equitable manner, and this objective has only one target, and that is the importance of plant diversity and the need for its conservation incorporated into communication, education and public awareness program. And the last target and the last objective of this program is the capacities and public engagement necessary to implement the strategy have been developed. And this last objective have two targets. First target of this objective is the number of trained people working with appropriate facilities sufficient according to national need to achieve the target of this strategy. And the last target of this objective is institutions, network and the partnership for plant conservation established or strengthened at national, regional and international levels to achieve the target of this strategy.